Hello friends, today we shall start with the third unit. First was the LDE, linear differential equations with the constant coefficient. In the second unit we have studied the theory of Laplace transform and its inverse transform. In this third unit we are going to study in part 1 the applications of Laplace transform. In applications of Laplace transform, today we shall study how do we apply the theory of Laplace transform in solving the linear differential equations with constant coefficient with initial conditions. So this is the cracking applications of the Laplace transform. It is widely used in various softwares such as MATLAB in solving the very critical linear differential equations, because it is quite easier to use the Laplace transform than by using our conventional method of CF and PI. Not every linear differential equations with initial conditions they are so very simple. Some of the examples they are easily used or solved by using this theory of Laplace transform. So, in solving this linear differential equations with constant coefficient, what is the method? If the linear differential equation is given to us, certain differential equations is given to us. So how to solve that differential equations along with the initial conditions? The first step is to take the Laplace transform of that differential equations, both sides. These are the first, second or third order linear derivatives of certain dependent variable with respect to independent. We have seen this dy by dt, d2y by dt, d3y by dt minus 4 d2y by dt2 plus 6y equal to e raised to power t sin t, something like this. So these are the linear differential equation, just involve the derivatives. So फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप, वो इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लें. In this linear differential equation, the derivatives they are denoted by y prime. Y prime means derivative of y with respect to some independent variable. It may be x or it may be t. Y double dash denotes the second derivative with respect to independent variable. So our notations they are in terms of y. So the function is y of t. Its Laplace transform we shall be denoting by y of s. Note this. So in taking the Laplace transform of this linear differential equation, we need to know these 2-3 formulae of the Laplace transform of the derivatives. Laplace transform of y dash is equal to s square y of s. Y of s means the Laplace transform of y of t minus s y of 0 minus y prime of 0. Note this formula. Laplace transform of y double dash. Laplace transform of y dash is
It is s into y of s minus y of 0, and Laplace transform of y of t is y of s. We may reproduce the formula for the third order derivative of Laplace transform of y3 dash is equal to s cube y of s minus s square y of 0 minus s y prime of 0 minus y double prime of 0. So each derivatives and their Laplace transform is to be calculated by these 4 formulas. After taking the Laplace transform of this given linear differential equation, the second step is to apply initial conditions. Substitute in that value of y of 0 and y prime of 0, nothing. Substitute, put y of 0 and y prime of 0. This is the second step. Third step is step 3. Find or obtain y of s. Collect all the terms of y of s on left hand side. Take the remaining terms on the right hand side, and from this calculate the value of y of s in terms of s. And last but not least, take inverse Laplace transform. In the very first step, we have taken the Laplace transform. In the last step, take the inverse Laplace transform of y of s. And inverse Laplace transform of y of s is y of t. That is your solution. In particular, it is a particular solution because you are involved y of 0 and y prime of 0. The solution of the given linear differential equation along with the initial conditions. Just remember, first step, take the Laplace transform. Second step, apply the initial conditions. Third step, obtain the value of y of s. Fourth step, take the inverse Laplace transform. So, you need to remember these 3 formulae: Laplace transform of derivatives, Laplace transform of y of t is y of s, y dash of t is sy of s minus s, y of 0, y double dash s square y of s minus s y of 0 minus y prime of 0, and so on. You need to know the Laplace transform of the derivatives, number 1. You need to know the Laplace transform of right hand side, some elementary functions, their formulae, number 2. Then obtain the value of y of s in terms of s, and then you must need to know the inverse Laplace transform. Then and then you will be able to obtain the solution of given linear differential equations with the constant coefficient along with the initial conditions. Let us solve these 2 examples. First is given y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to 12 e raised to power minus 2t, subject to initial condition. Y of 0 is 2, whereas y prime of 0 is 6. What does it mean? Y of 0 is 2. When the independent variable t is 0, value of y is 2. When the independent variable is 0, then dy by dt y prime is
6. Under such initial conditions, what would be the solution of this? Y double dash means d2y by dt square minus 3 y dash means dy by dt plus 2y. Conventionally, in the first unit, we have seen that its auxiliary equation is d square minus 3d plus 2. Minus 1, minus 2, these are the two real distinct roots. C1 e raised to power minus t, C2 e raised to power minus 2t. Because t is being the independent variable, not x over here. We used to solve this, but we are not going to solve by that conventional method. Perhaps हम Laplace transform से इसको solve करेंगे. So, taking, let us call this Laplace transform of both sides. Laplace transform of both sides. Laplace transform of first term. Laplace transform of y double dash minus 3 times Laplace transform of y dash plus 2 times Laplace transform of y of t. लेफ्ट हैंड साइड का लिया तो राइट हैंड साइड का भी लेना जरूरी है. 12 टाइम्स Laplace transform of e raised to power minus 2. अगर 2-3 डेरिवेटिव्स के Laplace transform के फॉर्मूले हमको याद होना चाहिए. Laplace transform of y double dash is s square, therefore by formula s square y of s minus s y of 0 minus y prime of 0. ये हो गया सिर्फ y डबल डैश का Laplace ट्रांसफॉर्म. अब सेकंड में माइनस 3 टाइम्स y डैश का Laplace ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0. ये हो गया सेकंड टर्म का Laplace प्लस 2 टाइम्स y का Laplace y ऑफ s इक्वल टू राइट हैंड साइड है हमारी 12 टाइम्स e रेस टू पावर माइनस 2t का Laplace ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s प्लस 2. हो गया. ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है. y डैश y डबल डैश. अब ये इक्वेशन में हम y ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, y prime of 0 की वैल्यू 6 ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. Putting these initial conditions. Therefore, we put initial conditions. Y of 0 is 2. Y prime of 0 is 6. So let us put this. So s square y of s minus y of 0 is 2 minus 2s. Y prime of 0 is 6 minus 6 minus 3s y of s minus minus plus y of 0. Y of 0 is minus 3s y of s minus minus plus 3 into y of 0 is 3 into 2 is 6 plus 2 y of s is equal to 12 upon s plus 2. I have substituted the initial conditions. Y of 0 और y prime of 0 की वैल्यू रखी. हो गया. अब y of s कैलकुलेट करना है, तो सब y of s की टर्म्स एक साइड में कलेक्ट करो. ये y of s की टर्म s square y of s, therefore s square y of s ये एक टर्म. दूसरी टर्म minus 3s y of s. नेक्स्ट टर्म इज 2y of s plus 2 टाइम्स इन ब्रैकेट. तीनों में y of s कॉमन है. ये minus 6 plus 6 गया, ये minus 2s बचा. एक minus 2s is equal to 12 upon s plus 2. Therefore s square
minus 3s plus 2 times y of s is equal to 2s plus 12 upon s plus 2, which is further equal to, इसको सिंपल करना है हमको, कैसे भी करके y of s डिटरमाइन करना है. s square minus 3s plus 2 times इसको हम ऐड कर लेंगे. ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 इंटू 1 अपॉन s प्लस 2 निकल गई हमारी वैल्यू. देयरफॉर y ऑफ s इज इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन s square minus 3s plus 2 into s plus 2. This is further equal to 2s square plus 4s plus 12 upon, इसके फैक्टर से s minus 1 s minus 2 और ये तीसरा वाला फैक्टर s plus. So this is the value of y of s. इसका अभी इनवर्स लेना नहीं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे. लेट 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2s प्लस 2. इसका रिजोल्यूशन 3 फैक्टर से, लीनियर फैक्टर्स है. सो a अपॉन s माइनस 1, b अपॉन s माइनस 2, c अपॉन तीसरा फैक्टर s प्लस 2 है. दीज आर लीनियर फैक्टर्स. a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते? a की वैल्यू का डिनोमिनेटर s माइनस 1 इक्वल टू 0. सो s इक्वल टू 1. लिमिट ले लेना, s टेंड्स टू 1 ऑफ दिस. इसको कवर अप कर ले, इसको बोलते कवर अप ट्रिक, कवर अप फॉर्मूला. इसकी लिमिट s टेंड्स टू 1, क्योंकि इसकी हम ले नहीं सकते, 0 हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा. इसकी लिमिट क्या होगी? s टेंड्स टू 1, 2 प्लस 4 प्लस 12 18 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 1 प्लस 2 3 माइनस 3. सो इट इज माइनस 6. a की वैल्यू माइनस 6 हुई. b similarly, limit s tends to 2 of this. Up 2 minus 1, 2 plus 2, 4. 4 2s are 8 plus 8 plus 12, 16 plus 12, 28 divided by 4 is 7, number 1. And c is limit s tends to now minus 2. माइनस 2, इसको कवर अप कर दो. माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 4 12. अब ये क्या है? माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 8 0 12 by 12 is 1. सो y ऑफ s की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू, सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आएगी? a अपॉन इज माइनस 6 अपॉन s माइनस 1 प्लस b इज 7 अपॉन s माइनस 2 प्लस c इज 1 अपॉन s प्लस 2. By resolving them into this partial fractions, their inverse has now been very, very simple. Taking inverse Laplace transform. y of s का इनवर्स होता है y of t. y of t, y is a function of t. इसका इनवर्स है माइनस 6 e to the power minus 1 is t plus 7 times e to the power 2t plus e to the power minus 2t.
इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन था d² माइनस 3d प्लस 2, जिसके रूट्स थे -1 -2, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 e टू द पावर -t प्लस c2 e टू द पावर -2t। तो ये दो टर्म्स यहां पर e टू द पावर -t e टू द पावर -2t -3 प्लस 2 d² माइनस 3d प्लस 2। One and two, they are roots. So e to the power t and e to the power 2t, these are the complementary function. This constitute the complementary function. इसका auxiliary equation था d² माइनस 3d प्लस 2, d minus 1 d minus 2 ये दो factors थे, और 1 and 2 they are the real distinct rows. But we have found this solution by using the Laplace transform. One more problem we shall see, so as to clarify more this example. Next example is y double dash plus y is equal to t. Initial condition है y of 0 1, y prime of 0 minus 2. Okay. ये देखा जाए तो इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन है d² प्लस d, d² प्लस d, not d² प्लस d, perhaps d² प्लस 1 इक्वल टू 0। d² प्लस 1 इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन है, और इसके रूट से प्लस माइनस आए, तो c1 cos t प्लस c2 sin t इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वी शैल सॉल्व दिस बाय यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग Laplace transform of both sides, this LDE with constant, L of y double prime plus L of y is equal to L of t, Laplace transform of t. y double dash का सेकंड डेरिवेटिव का Laplace transform होता है s² y of s minus s into y of 0 minus y prime of 0, y of t का Laplace transform y of s. Now t का Laplace transform 1 upon s², t to the power n का Laplace transform होता है n factorial upon s to the power n plus 1, n factorial upon s to the power n plus 1, or gamma of n plus 1 upon s to the power n plus 1. So this is t का Laplace 1 upon s. Now employ the initial conditions. ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y of 0 की वैल्यू 1 है और y प्राइम की 0 -2, so s² y of s minus s, y प्राइम की 0 -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस y of s इक्वल टू 1 by s² by initial condition, using initial condition. I have just used the initial conditions. Now collect the values of y of s. Then दो ही टर्म्स है, s² प्लस 1 in bracket into y of s, दो ही टर्म है। ये बची वाली टर्म राइट हैंड साइड में ले लेंगे, s minus 2 प्लस 1 by s², और s y of s is equal to s minus 2 upon s² plus 1 plus 1 upon s² into s² plus 1
दैट इज फर्दर इक्वल टू, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टैंडर्डाइज फॉर्म, s माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, a माइनस b अपॉन c इज a अपॉन c माइनस b अपॉन c, क्योंकि इसके इनवर्स पता है हमको, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ t, 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यहां पर s स्क्वायर रिपीटेड है और न्यूमरेटर 1 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत जल्दी से निकल जाएगा। कैसे? एडजस्टिंग न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैं 1 न्यूमरेटर का ऐसे एक्सप्रेस करता हूं, s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर है s स्क्वायर एक टर्म और s स्क्वायर प्लस 1, इसकी मदद से मैंने 1 को एक्सप्रेस किया s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर 0 और ये 1, सो दैट इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसका रिजोल्यूशन सिंपल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, ये s स्क्वायर अपॉन दिस s स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर, ये माइनस यहां पर s स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ t माइनस 2 sin t प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर का इनवर्स t, क्योंकि t का इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर था, माइनस अगेन साइन ऑफ t, माइनस 2 sin t माइनस sin t माइनस 3 sin t, so cos of t minus 3 sin t plus t, that is your final value of y of t by taking what we have taken, inverse Laplace transform of all these 4 terms, s upon s square plus 1 cos t, 2 upon s square plus 1, 2 sin t, 1 upon s square t, and 1 upon s square plus again sin of t. So this is the required solution of given LBE with constant coefficient. I have told you the C1 cos t plus C2 sin t is the complementary function. So cos t and sin t, they are involved in this our answer. We have found this answer by using the theory of Laplace transform. So hope you have understand this method of solving the linear differential equations with initial conditions. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ दिया हुआ तो सॉल्व नहीं होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ में इनिशियल कंडीशंस होना बहुत बहुत जरूरी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, विथ इनिशियल कंडीशंस ही सॉल्व होगा, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में फॉर्मूले कैसे हैं, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो या एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो, ये वाई ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन ही ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए ये फॉर्मूले हमने सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज किए हुए हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।